Hello friends, this is CA Omkar Gadgil here. Well, this is just a very short lecture for you so that आप indirect tax के पेपर का exact preparation ideally कैसे कर सकते हो for scoring a ideally good marks what you can say. Now friends, आज आप थके हुए हो अभी आप जब direct taxes के पेपर से वापस आए हुए हो so I know that it is not very much a comfortable position so far as the regeneration of energy is concerned. इसलिए आज के तारीख में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे that today you finish up with only amendments and case laws that are there. ठीक है, अब ये case laws का reading आज पूरा कर लो once and then you also try to finish up with the amendments that have come up in excise and service tax mainly. कस्टम्स में खासा अमेंडमेंट्स है नहीं तो मे बी वो आप कल के लिए छोड़ सकते हो, कस्टम के सिलेबस के साथ कंप्लीट कर सकते हो. टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, गिव roughly around 3 hours for excise, roughly around 3 hours for service tax, 2.5 hours for customs and FTP. And again, while doing this, Senvat will be an integral part of it. उसमें जो Senvat credit rules में बहुत सारे amendments आए हैं, specifically give focused attention on that. Secondly, वैल्यूएशन सम्स इन एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो बिकॉज वैल्यूएशन के सम्स ये एग्जैक्टली अपने को फुल मार्क्स देने के चांसेस होते हैं, इसलिए वैल्यूएशन के सम्स भी बहुत अच्छी तरह से फोकस करो. डोंट keep reading each and everything, it is only the most important things that you have read or underlined till now, सिर्फ वही अभी अपने को वापस करना है. Being an attempt of November 2015, all the notifications that have been issued up to 1st April 2015 are very important for you to know. Exams में जब amendments पे questions आते हैं, directly they come on specific chapter, specific part of the amendment that have been made. So be very conscious while you read the amendments. बिल्कुल भी उसमें इधर उधर नहीं करना, जितना supplementary paper में आया है पूरी तरह से read करके जाओ. And again, the next day when you get up, just जिस दिन आपका आईडीटी का पेपर है, that is day after tomorrow, उस दिन सुबह आप वापस एक बार पढ़ोगे केस लॉज एंड अगेन द अमेंडमेंट. सो सिर्फ इसमें क्या होता है, देखो आज आप केस लॉज अमेंडमेंट पढ़ोगे, कल के दिन में आप पूरा एक बार टेक्स्ट कंटेंट एज वेल एज अमेंडमेंट पढ़ोगे एंड डे आफ्टर मॉर्निंग में यू आर गोइंग टू रीड द केस लॉज एज वेल एज द अमेंडमेंट्स. सो यू आर गोइंग टू रिवाइज योर केस लॉज एंड अमेंडमेंट्स एटलीस्ट 2 to 3 times, let's say, before you are going to go and write the paper. नाउ ये सब प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शंस पे कोई चीज छोड़ना नहीं, बिकॉज दैट विल बी समथिंग व्हिच विल कॉस्ट यू मोर. दिस टाइम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज बीन द न्यू FTP 2015-20. So more or less the new schemes that have been inserted, that is MEIS and SEIS, ये स्कीम्स के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस अच्छी तरह से करना, बिकॉज मेरे हिसाब से वो चीज नया है तो ऑफ कोर्स इट विल contain some of the other questions. Some questions in FTP on the star house exports, that is the newly introduced concept, 1 star, 2 star, 3 star. वो कैटेगरी वाइज जो आपको ये दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, वो थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ के जाओ. That should be one good area for scoring. So far as customs is concerned, I believe stick to the basics. Customs में इससे ज़्यादा basics से ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, but do some important revisions of those valuation formulas, जैसे freight का है, transit insurance का है. Be very definite in that approach. When you refer to service tax, of course all the notifications, abatement के percentages, उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना. wherever there have been changes, especially works contract में वगैरह ध्यान देना, वो परसेंटेज के बेसिस पे ध्यान दो. जहां जहां पे भी एग्जाम्पशंस है, स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्पशंस पे थोड़ा सा ध्यान दो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सर्विस टैक्स. See now, negative list में only 1 or 2 changes that have come up in terms of the print media वाला service and in terms of the manufacturing में जो अल्कोहलिक लिकर वाला पार्ट है, वो जो नया अमेंडमेंट आया, सो नेगेटिव लिस्ट में वो चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैटर करेगी. पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स में the change in effective rate of tax that has taken place for the first time, so वो टाइप के रूल के ऊपर मे बी 1 or 2 क्वेश्चन that come up because service tax का रेट चेंज हो गया from 12.36 to 14%. so that is the only probable change that you can expect in, I mean that is the only probable question that you can expect on point of taxation rules because it has happened for the first time. so change के पहले क्या था, change के बाद में क्या है, ये टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है. The next I would suggest is
Valuation of services, abatement, exemptions, these chapters should be very properly read by you. They are very important and वो ही इस revision में important है. Place of provision of services, it is purely based on your understanding. So I suppose that place of provision of services rules आपको अभी by now you must be very decently updated about it. So intermediary services में जैसे location of service provider is important, and then order of the application, later the better maxim. These things will be very crucial when you understand them. Now, so far as the rest of the part of service tax is concerned, the more things will be SENVAT related service tax issues and the valuation of services. So your major constituents of marks will be from this, as well as from say around 12 to 15 marks from the case laws. जब हम लोग एक्साइज की तरफ बढ़ेंगे, आई विल सजेस्ट यू दैट एक्साइज में बेसिक्स ऑफ एक्साइज, क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर्स ज्यादा आपका टाइम नहीं खाना चाहिए. मे बी 1 hour में, आई मीन मे बी इवन 45 minutes में योर रिविजन शुड बी गेटिंग ओवर ऑन दिस. सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली वैल्यूएशन रूल्स में जो जो अमेंडमेंट्स हुए, प्लेस ऑफ प्रोविजन, आई मीन इन टर्म्स ऑफ द व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस ऑफ रिमूवल में जो एक एडिशनल चीज सेनवैट क्रेडिट रूल्स के डेफिनेशन में इंसर्ट की गई थी कि प्लेस ऑफ रिमूवल में क्या क्या कवर होता है. सो वो टर्म्स में वैल्यूएशन का पार्ट थोड़ा सा अच्छे से देखो. फियाट इंडिया ऑटो के बाद जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के डेफिनेशन में जो एडिशनल कंसिडरेशन वाला पार्ट था, उसमें जो चेंजेस आए थे, बिकॉज ऑफ इट दैट थिंग हैज आल्सो बीन extensively made applicable. Read that amendment also very carefully. The other list of inclusion and exclusion in transaction value, that should be very important to note. So वो exclusion inclusions में क्या है क्या नहीं है देखो. Problem solve कर रहे हो, keep it in mind whether the amount is given inclusive of duty, exclusive of duty, or including those charges, excluding those charges. Only that format based calculation is very important. And उसके अलावा एक्साइज में एसएसआई एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर बार 5 मार्क्स दे के ही जाएगा. सो एसएसआई दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको एग्जाम्शन 8/2003 नोटिफिकेशन ऐसे भी नाम से जाना जाता है. सो वो एक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. SENVAT credit as is going to have a common application between excise and service tax, so that will not be bothering much once you have done SENVAT credit already with the service tax. So वो एक चीज पे थोड़ा सा फोकस करो. Procedural aspects of excise में जितने amendments आए हैं, so based on that also try to be alert about it. Now your जो मैंने आपको 3 hours बोला था कि 3 hours excise 3 hours service tax, उसमें ये सब चीजें सिर्फ आपको वापस अभी रिवाइज करनी है. सो लेट योर अप्रोच बी ओरिएंटेड प्रोसेस बेस्ड. अभी जैसे मैंने बोला कि टुडे यू आर गोइंग टू डू केस लॉज एंड अमेंडमेंट्स. टुमारो यू विल बी डूइंग 3 hours एक्साइज, 3 hours सर्विस टैक्स, 2 hours 2.5 hours कस्टम्स प्लस एफटीपी, and then again you will be revising amendments, and day after tomorrow morning में again one reading of case laws and the amendments. And मेरे हिसाब से this should be very much sufficient for you. I am not be giving any technical inputs right now in this lecture. I am just over here to share my views on how to prepare one day before the, I mean how to actually go through the syllabus that you are having one day before the exam. So there is no technical aspect in the lecture that I'll be sharing with you. The next, once you approach the paper, पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि केस लॉस के क्वेश्चन एक साथ आते थे. जैसे पहले कभी कभी आया करता था दैट 2 क्वेश्चंस आर देयर ओनली फॉर केस लॉस. नाउअडेज द ट्रेंड हैज बीन फ्लक्चुएटिंग दैट कभी कभी केस लॉस का क्वेश्चन बीच में आता है, बाद में आता है. सो द फर्स्ट 15 minutes में ही ट्राई टू मार्क आउट वेर यू आर हैविंग केस लॉस इन द पेपर. दैट विल गिव यू अ मोर ब्रीफ आइडिया एज टू हाउ टू गो अबाउट द पेपर, हाउ आर यू गोइंग टू एक्चुअली गो थ्रू द पेपर, एंड फिर तुम्हारा स्ट्रेटेजी उसमें से डिफाइन हो पाएगा. सो दैट इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट. सो 15 minutes को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू राइट एन आंसर, बी वेरी मच टू द पॉइंट. इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर्स में थियोरेटिकल आंसर्स भले ही लिखने पड़ते हो, बट दे शुड ऑल्सो बी वेरी मच टू द पॉइंट. सो मेक इट sure that whatever you are writing is up to the point. Nothing should be going haywire. जितना जस्टिफाइड लिख सकते हो उतना ही लिखो. केस लॉस का आंसर लिखते हो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करो. फैक्ट्स ऑफ द केस नॉट मोर देन 2 lines. Legal issues involved, citations, application, and conclusion. Again, not more than 2 lines in terms of conclusion. So, write a good professional answer that will be only expected for case law. When you write the practical problems, not just the adjustment but the note is also equivalently important. So ensure that when you write a problem, जैसे adjustment करोगे वैसे note भी नीचे लिख डालोगे, उसी मैनर में आपके problems का भी full marks मिल सकता है. So see around 25 marks का जो आपको practical problems आता है, if you score good in that, if you score good in case law based question, if you have done the amendments thoroughly, I believe that
exemption is not at all a problem then, because then that is what actually is needed. All in all, it will be just a professional touch, and happily I can say that okay, this is the last paper that you are writing for the exam, so just उसको पूरा अपना 100% अभी दे दो, and अच्छी तरह से सिर्फ strategies follow करो, and keep writing till the final go of the last bill, because it is the last paper, so like till the last moment, and finish it up your exams in a very great fashion and great style. So this is just what I wanted to share. Being an indirect tax faculty for last 3 years, this is what some experience I've gathered, and based on my own experiences, I could tell you. So I wish you all the best for the last paper, and let's sometimes get in touch through maybe social media. I'll be providing my details through this video also, my email ID as well as my contact number. So wherever you have any doubts or any help you need in direct taxes, you can certainly contact me. So again, this is Chartered Accountant Omkar Gadgil signing off from you. Thank you so much. Best of luck.